Hi friends, welcome on Yourpedia, the platform where you can prepare for many exams for which you are provided a tailor-made module. This video is related to manager marketing in IOCL. So it is first time that Maharatna company IOCL is coming out with such wonderful opportunity to all of you जिनके पास MBA full years 2 साल का regular MBA experience is not required. Your age 28 years. Like if your MBA with 28 less than 28 years of age for unreserved, 31 for OBC and 33 for SC/ST, and you want to join IOCL, this is opportunity for you. You can still fill the form because form filling is still going on in IOCL, and exam is 24th September. Yourpedia is rolling out this module for you, marketing manager, and there are 31 topics. In my opinion, if you do these 31 topics as Yourpedia mentors will provide you with the questions, with content, you will surely clear this exam. And then next stage is GD, GT, PI, for which obviously Yourpedia is the main platform where we mentors will help you. So let me take the first chapter for you, and this one is 24th September. You have your exam, friends, and this notification came recently in which these were the jobs, and for which marketing we have 41 vacancies for marketing. So that is a really good number, and 14th August and form filling started, and it will keep on going till 3rd of September. So online application you can fill till 3rd of September, and this entire module Yourpedia is going to complete by 15th of September. 24th September is your exam. So as I told you, 28 years for marketing manager, this is the thing, and 2 years MBA is required. Selection process, so there is a CBT which consists of 100 marks and 120 minutes. So this general aptitude is 50 marks, and then your syllabus which is provided to you consists of 50 marks. So then shortlisting and everything is there. So you have to score minimum marks. So this percentage weightage of CBT is 85%. So that is the reason, I mean, you should score really high, and then you have to clear GD, GT and PI stage also. So looks like great opportunity for you, friends. And this is the syllabus for English. So paper 1, which is 50 marks, you should try to score 40 out of it. So this is English language, quantitative aptitude, logical reasoning, that is a syllabus, and then this is marketing manager syllabus given by IOCL itself. 31 topics, so very concisely. And today I'm going to take the first chapter in totality. The first chapter we are going to do today, that is introduction to marketing. What is market? What is marketing? What is the difference in need, want and demand? Very interesting. Marketing orientation. What is a holistic marketing? Marketing mix किसको बोलते हैं? And recent trends क्या हैं marketing के? We will discuss that, and then followed by questions. So these are 31 topics, friends. All of you, these 31 topics you can prepare, and these topics are look like huge syllabus, but believe me, you can revise it in 25 days. Entire syllabus can be revised in 25 days, and that is what you should do. Give yourself 25 days. So let's start with introduction to marketing. That is, what is market, marketing, need, want, demand, marketing orientation, holistic marketing, marketing mix, recent trends in marketing, that all we should do. So let me tell you what is market and what is marketing. Market जहां पे customer बैठा है, the customer, where is customer? So where is customer for you? If I say Yourpedia education, the market, one of the market segment for Yourpedia education is educational institute. We are ad tech company, right? Yourpedia is ad tech company. So educational institutes, and if I say largely our students, those who are managers and all, for this module, marketing manager, what is the market for this module? Those who have done MBA, those who are in their management colleges, they have just done their MBA, that is a market for us. Market where the customer is, we have to catch that market customer. And now you have created a product. Now this one is a product, CBT preparation module for IOCL marketing manager. That is a product by Yourpedia education. Now I want to sell that product. So before selling comes the marketing, where I am to tell my customer about the product. So YouTube can be one place where I'm doing
marketing now. This my lecture can be a marketing, where I'm telling the prospective customers, that is those with MBA degree, I will tell them they are my customers. I will tell them that this is what my module is, this is my quality of classes, this is my content quality, this is how you have to prepare. I am doing marketing as of now. Teaching, obviously, I'm doing, but you can call it marketing because you want to sell your product to the customer. That is a marketing. Marketing is a process. So digital marketing आपने सुना है, आपने पम्फलेट मार्केटिंग सुना है, आपने न्यूज़पेपर मार्केटिंग सुना है. मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाना. दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग. सेल्स अलग है. द मोमेंट कस्टमर कम्स एंड देन यू हैव टू टॉक टू कस्टमर वन टू वन. सो इन मार्केटिंग यू मे नॉट बी टॉकिंग टू कस्टमर, कम्युनिकेशन मे नॉट बी देयर, विजिबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट इज देयर. दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग. तो व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज बेसिकली फिजिकल और वर्चुअल. मैंने बताया यूट्यूब भी हो सकता है वर्चुअल. फिजिकल प्लेस जहां पे आपका कस्टमर बैठा है, बायर बैठा है, and you are to basically sell him something. So it depends upon demand and supply. Like IOCL has come. अगर मैं मॉड्यूल IOCL की बिना नोटिफिकेशन के लॉन्च करूं, so suppose IOCL is not come out with vacancies of marketing manager, so this product I cannot sell. And think another case, only 2 seats of marketing manager, customer may not feel motivated. So demand and supply. If there is a demand, I'll supply. I'll see where the market is. Market depends upon type of customer. MBAs for me, students for me, candidates for me, जो अभी जॉब जिन्होंने स्टार्ट किया है प्राइवेट में. ज्योग्राफिक साइज, टाइप्स ऑफ गुड्स, उसके ऊपर मार्केट डिपेंड करता है कि मेरी मार्केट है क्या, मेरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है. मेरा एजुकेशनल प्रोडक्ट है तो मैंने आपको बताया वेयर माई मार्केट इज एजुकेटेड स्टूडेंट्स. इफ इट इज लाइक टाइप ऑफ कस्टमर, वेयर द कस्टमर इज. सो दैट इज हाउ इट ऑल गोज. मार्केटिंग तो मार्केट हो गई जहां पे कस्टमर बैठा है, वो हो गया मार्केट. वो उसके दैट कैन डिपेंड अपॉन ज्योग्राफिकल साइज, दैट कैन डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ कस्टमर, देयर स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच यू हैव, विच यू वांट टू सेल. सो मार्केट उसके ऊपर डिपेंड करेगा. एंड व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज द मेथोडोलॉजी और मैकेनिज्म दैट विल बेसिकली कनेक्ट योर कस्टमर और योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर और योर बिजनेस. बिजनेस here means product to its market, to the customer. So when I say mechanism that connects business means what product you are trying to sell, and market means where the customer is sitting. So if you connect customer with product, that is marketing. So you have to identify customers requirement. What customer requires? He has very limited time and lot of syllabus to prepare, so he is looking for to the point content, na jada na kam, to the point. So develop it and now deliver the product or service to satisfy that need, because quality product means satisfying the customer. Quality of any product or service is decided by the customer, so it should satisfy his need, demand, want. जो आगे आएगा अभी हम डिस्कस करेंगे, नीड क्या होती है, डिमांड क्या होती है, वांट क्या होता है. तो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर दिया. So basically marketing means product marketing. You create a product or service that meets the customer's requirement, that is product. Price, you keep the price such that they're willing to pay, right? So unless until customer is willing to pay, even if you have made a product, that will be of no use. Place, choose the best channel to sell the product. Like I'm choosing YouTube channel. Why? Because most of my customer, maybe they are sitting on the YouTube channel, or maybe we do other marketing also, because offline marketing cannot be done. I cannot start going to college to sell this product. So YouTube can be the right place where I'm marketing. So कहाँ marketing कर रहा हूँ, मेरा place कहाँ है, market है, वो market हो जाएगी student की. Promotion means now I'm telling my potential customer about my product and service. ये होता है marketing. तो टेबल के थ्रू आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. तो मार्केट होता है प्लेस, प्लेटफॉर्म जहां कस्टमर बैठा है. मार्केटिंग होता है एक्टिविटी, सो दैट आई एम टू क्रिएट अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्रिएशन इज बेसिकली वो अलग चीज है, लेकिन प्रोडक्ट को विजिबिलिटी बढ़ाना, कम्युनिकेट करना, एंड मेरे को कस्टमर को व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, आई एम टू प्रोवाइड दैट. So when you go through this document, maybe at the end of the document you realize that yes, this is what I wanted, because if I'm to become IOCL marketing manager, then this is the document I'm looking for. This is the kind of quality I'm looking for. So that is the meaning of it. Now nature क्या होता है मार्केट का? Environment provide करता है वो exchange के लिए. Market provides you the place where you can meet your customer can see you that. This is the process, managerial function. Marketing is a managerial function. Market is a place. It is a managerial function. Marketing is a process actually.
सो पर्पज इसका क्या होता है, सो दैट आई कैन कई बार आप देखते हो मंडी, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मंडी. मंडी इज अ मार्केट वेयर यू गो एंड परचेज वेजिटेबल्स एंड ऑल. दिस आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग हिंदी. दिस इज मंडी. मंडी मीन्स मार्केट, जहां पे आप गए और आपने किया, फिर वो मंडी होती है. अब इन द मार्केट और मंडी पीपल आर स्टैंडिंग विद द होर्डिंग, दे आर डूइंग मार्केटिंग. Market is mandi where customer is there, seller is there, buyer is there. That is, sometime you have mandi of market of fruit, sometime vegetables, or it is like animals also where you are purchasing animals and all. So customer key marketing is to identify and satisfy customers need so that profitability is there. Focus is like product, buyer, seller, value creation, customer, relationship building. Marketing mein relationship building is very important. So it is the marketplace and the participants. It is research, working on the product. So that all is basically related to this. This is how it is done. Okay. So now generally it is controlled by demand and supply. जितना मार्केट में डिमांड है, सप्लाई है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. It eventually depends upon that. ओके एंड प्लेटफॉर्म है ट्रांजेक्शन के लिए. सो गो थ्रू दिस टेबल, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग. सो इट इज द बेसिकली प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स आर देयर, सम काइंड ऑफ एक्सचेंज टेक्स प्लेस देयर. एंड मार्केट में आपका सेल वगैरह भी होता है, यू कैन गो एंड परचेज. Marketing is like you are creating value in the mind of customer that this is my product. You are making the customer aware about your product. Market is where customer goes and customer may purchase. Market is where the customer is and you also go there as a seller or as promoter of your product. So automobile market आप जानते हैं, stock market आप जानते हैं, rural market, vegetable market, advertisement, branding. So when I say I'm advertising, when I'm making this video, it is not a market, it is marketing. जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्केटिंग है अपने प्रोडक्ट का. और मार्केट कहाँ पे है? मार्केट वो स्टूडेंट हैं यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए जो इसको देखेंगे. मेरी जो प्रोसेस है मार्केटिंग है. दिस वीडियो मेकिंग इज अ मार्केटिंग. मार्केट इज यूट्यूब, जहां पे कस्टमर होगा. यूट्यूब इज अ मार्केट एंड पब्लिशिंग ऑफ दिस वीडियो इज मार्केटिंग. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म. नाउ डिफरेंस क्या हो गया फिर नेचर में? मार्केट एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है, एनवायरनमेंट है ट्रांजैक्शन करने के लिए. मार्केटिंग एक्टिविटीज है जो इस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करता है. सो इफ मार्केटिंग डन इज गुड, कस्टमर में बी सेटिस्फाइड एंड देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट. पर्पस क्या है? टू फैसिलिटेट एक्सचेंज. मार्केटिंग बेसिकली जो कस्टमर की नीड को जनरेट भी करता है, सेटिस्फाई भी करता है, तो एक्सचेंज प्रमोट होता है. So market is customer oriented. Market is where customer is sitting. Platform where customer is available. So marketing is business oriented, right? So how to influence customer behavior? So influencing the customer behavior is marketing. Specific place or area where trading happens, mandi. Mandi, market is mandi. Right? So research, product development, distribution, sales, customer branding, वो सारा मार्केटिंग है. सो राइट, सो व्हेन यू प्रमोट योर प्रोडक्ट थ्रू मार्केटिंग, यू आर क्रिएटिंग इट्स वैल्यू. कम्युनिकेशन बिटवीन बायर एंड सेलर टेक्स प्लेस एट अ प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड मार्केट. Right? So these are market and marketing. So you have understood the difference between market and marketing, and then please go through the questions जो आपको provide किए गए हैं. The moment you do this question, you will understand the meaning of market and marketing and the difference of these two. Now comes customer need, want, demand. Okay, मेरे को भूख लगी है. I want food. That is my need. Need of food. Yes. You tell me that मेरे को भूख लगी है, that is your need. My question is, what do you want? I want pizza. Okay, but it is going to cost. Are you ready to pay? It is going to cost you 300 rupees. Yes, I'm ready to pay. And the moment I place order, I demand that you give me pizza. So there are three things.
जो आपका नीड है दैट इज बेसिकली ड्रिवन बाय मे बी सम टाइम बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स. नीड है, यू वांट इट, आई मीन दैट इज योर फॉर सर्वाइवल चाहिए होता है आपको नीड. रोटी कपड़ा मकान, सुना है ना आपने, रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर एंड and clothes, these are your needs. But then you have a choice, particular type of food, particular type of house, particular type of cloth, that is your that it comes next, that is you want it. I want this, I need it, I need it, that means it is urgency. I want it, your choice comes into this. Demand, can you pay for it, are you ready to pay for it? So your requirement, your choice and you pay. So need are the basic human requirement. आपने मास्लो के नीड हायरार्की किया था. Basic human requirements are needs. And if you know the market's need, want and demand, then you will be in better position to market your products. Why we are studying customers need, want and demand in this chapter? Because marketing is all about customers. I mean, selling the product to the customer. We need to know what customer need, what he wants, what he can demand from us. That is what. So अगर मैंने बोला कि आप कैंडिडेट्स का नीड है, ये नीड है कि मेरे को जॉब लेनी है, जॉब इज योर नीड. ओके, आई वांट अ जॉब, सो आई नीड अ जॉब. अब जॉब तो आप ऑलरेडी प्राइवेट में कर रहे हैं. नो, आई नीड पब्लिक सेक्टर जॉब, बिकॉज पब्लिक सेक्टर जॉब्स आर गुड. आई नीड, आपकी चॉइस आ गई. Okay, so if I create a product for you where you can crack this exam of IOCL marketing manager, will you take it? Yes, I'll take it. In this cost is, so you demanded it. Sir, we demand that you come out with marketing. That is how Yourpedia has come out with the marketing manager module. Marketing manager module because customer demanded. Customer demanded means what? We were sure customer is going to pay if we give them this kind of quality जिनसे उनका एग्जाम निकल जाए. तो ये उनकी डिमांड हो गई. जो बेसिक रिक्वायरमेंट जॉब है मीट करता है, एंड कस्टमर वांट समथिंग स्पेसिफिक. मेरे को जॉब तो चाहिए लेकिन मेरे को पीएसयू की जॉब चाहिए. दैट इज यू वांट अ पीएसयू जॉब. जॉब इज आई नीड, यू नीड, ऑल ऑफ यू नीड अ जॉब. जॉब की रिक्वायरमेंट तो है, ऑब्वियसली सर्वाइवल करना है. मेरे को पीएसयू की जॉब चाहिए, वो नीड नहीं है, वो तुम्हारी वांट है. तो डिमांड क्या है? सर एक मॉड्यूल लेके आओ मार्केटिंग मैनेजर के लिए, हम उसके लिए पे कर देंगे और हम वो मॉड्यूल चाहते हैं. बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट नीड है, वांट ए स्पेसिफिक प्रेफरेंस जो मैंने आपको बताया पीएसयू की जॉब, और डिमांड है कि मैं उसको पे कर दूंगा. तो नीड बेसिक रिक्वायरमेंट है, वांट है जिसमें आप बेसिकली पर्सनैलिटी अपना इंडिविजुअल चॉइस आ जाती है. डिमांड है कि मैं उसका, मेरा बाइंग बिहेवियर है, मैं इसको ले लूंगा, आप मेरे को दे दें. अभी थोड़ा सा डिटेल में, नीड आर बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट. आपने मास्लो का नीड हायरार्की किया है. मास्लो के नीड हायरार्की में मास्लो का एक मोटिवेशनल मॉडल है कि ह्यूमन बीइंग इज ड्रिवन बाय देयर नीड्स. बेसिक नीड्स आती हैं आपकी, जैसे ये आपके फूड वगैरह बेसिक नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, बॉडी नीड्स. तो ये जितना भी पेप्सी, पिज्जा, ये आपका बेसिक फूड नीड के ऊपर बेस्ड है. उसके बाद सेफ्टी नीड. मार्केटिंग कंपनीज कैसे, देखो आपके बेसिक नीड्स का रिक्वायरमेंट यूज करते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए. फूड एक बेसिक नीड है, तो ये सारा कोका कोला वगैरह, जब प्यास लगती है आपको तो कोका कोला की याद आती है आपको. सेफ्टी नीड्स ICICI प्रूडेंशियल, लाइफ सिक्योरिटी, लाइफ इंश्योरेंस, वो आपकी सेफ्टी नीड है. सोशल नीड, ये फेसबुक, ट्विटर, सारे लोग लगे हुए हैं आजकल वीडियो बना के डालने. क्यों? वो इंस्टाग्राम क्या है, वो आपकी सोशल नीड्स है. एस्टीम नीड, आईफोन, मर्सिडीज होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए. एस्टीम नीड्स. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे आपने एनजीओ ज्वाइन कर लिया या आपने कोई फिलैंथ्रोपिक काम कर लिया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ऐसे तुम्हारा सारा होता है. अब वांट में क्या आ गया? नेसेसरी नहीं है, लेकिन आई हैव चॉइस फॉर दिस. देखो आपकी नीड तो अनलिमिटेड हो सकती हैं, वांट आपकी अनलिमिटेड हो सकती है. आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस. नीड होती है जो रिक्वायरमेंट है, वांट होती है जो रिक्वायरमेंट शायद ना हो, लेकिन तुम फिर भी लेना चाहते हो. नीड इज समथिंग जो सर्वाइवल के चाहिए, वांट इज समथिंग जो आप लेना चाहते हो. यू मे नॉट नीड इट बट यू डिजायर इट. सो एंड देन कम्स डिमांड. कस्टमर इज विलिंग टू पे, परचेजिंग पावर भी आ गया. और आपको ये नॉलेज अबाउट वांट, नीड एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट. अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हो जो कस्टमर जिसके लिए ज्यादा पे कर सकता है और कस्टमर उसको पे करने की पोटेंशियल रखता है, अगर आप उसकी नीड पूरी कर दो,
उसके वांट पूरा कर दो। नीड जॉब लेना, वांट मेरे को यही जॉब चाहिए। सोचो ऐसे बहुत से एमबीए कैंडिडेट्स होंगे जो अपनी जॉब से दे आर नॉट हैप्पी, एंड आईओसीएल की मार्केटिंग मैनेजर की जॉब इज अ वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छा करियर है मार्केटिंग मैनेजर का। तो ऑब्वियसली जिसने एमबीए किया है वो आपको, अगर आप उसकी हेल्प कर दो तो वो डिमांड उसकी वो ही कैन पे दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल ऑल्सो, इसलिए आपने क्रिएट कर दिया। अब ये टेबल जो आपने फ्रेंड्स देखना है, तो मेरी नीड फूड की है, फूड में तो दाल चावल भी आता है, लेकिन मेरे को पिज्जा चाहिए, आई वांट पिज्जा, पे कर दोगे? हाँ कर देंगे। नीड मेरे को जॉब की है, लेकिन चाहिए पीएसयू की, आईओसीएल की जॉब चाहिए, क्या पे कर दोगे उसके लिए? हाँ सब पे कर देंगे। तो आपने मॉड्यूल डिमांड किया, यू डिमांडेड मॉड्यूल फ्रॉम योरपीडिया, आपने योरपीडिया को बोला, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स दिस इज ट्रू, मेनी कैंडिडेट्स अप्रोच्ड गुरिंदर सर दैट वी demand that you should come out with such module because number of seats are 41. That is need, want and demand. Marketing orientation क्या होती है? Marketing orientation means क्या चाहिए आप कस्टमर को, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को प्रोड्यूस करो, प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंगली बनाओ, अकॉर्डिंगली सेल्स अपनी रखो, अकॉर्डिंगली मार्केटिंग बनाओ, एंड सोसाइटल मार्केटिंग आप उसमें करो। Yourpedia realizes that the most important thing to sell any product is to generate trust among the customer. Customer में trust generate करना. If customer trust you, then obviously on the online platform they can purchase your product. So how to generate trust in the customer? Serve them well. Serve them well, and many times Yourpedia is providing the free content for those exams for which we are not providing the full module. Like ONGC module is not being provided, but the mentors are serving the customer in the free WhatsApp group we have created. So basically you are doing the marketing, but societal marketing which is basically serving their purpose. You have to serve effectively, you have to respond to the market requirements, you have to develop good customer relationship, and long term के लिए this is very important that you develop the relationship with the customer relationship आपको डेवलप करना है. This is very very important. So marketing orientation means that. So when you focus on the customer's need and you focus on what is the impact, societal impact of this product which you are trying to make, then the orientation becomes marketing orientation. So marketing orientation means that orientation in which you create the products, you create the service which eventually is going to serve the customer in a very good manner. आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हो, सर्विस बनाना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले पूछते हो कि व्हाट कस्टमर इज लुकिंग फॉर, एंड देन अकॉर्डिंगली यू मेक इट. प्रोडक्शन ओरिएंटेशन मींस you want to achieve, so it is in the initial stage of industrialization, you focused on the production कि मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूं, so that I wanted to earn more profit. In the beginning when the machine era started, this evolution it is telling you now, कैसे मार्केटिंग ओरिएंटेशन इवोल्यूशन कैसे हुआ, ओरिएंटेशन ऑफ द मार्केट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हाउ इट इवॉल्व्ड. सबसे पहले जब मशीन एरा स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो फोकस वाज ऑन प्रोडक्शन आउटपुट. Focus was less on what customer is looking for because that time demand was huge, supply was less. तो जब आपका demand is more, firms basically you are continuously increasing your output. So you believe that people basically you want to sell them, focus on manufacturing, pushing the product into market. Supply was limited, demand is high. इमेजिन करो एक ऐसा टाइम था जो कार लिमिटेड मिलती थी, स्कूटर के लिए वेट करना पड़ता था. आपको स्कूटर खरीदने के लिए आज आपने स्कूटर के लिए पैसे दिए, आपको 20 साल के बाद स्कूटर, 10 साल का स्कूटर मिल रहा है. सपोज डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते थे. तो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन. मार्केट ओरिएंटेशन क्या थी उस टाइम पे? प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन करो. अब आगे चलते हैं. उसके बाद प्रोडक्ट ओरिएंटेशन हो गई. अब प्रोडक्ट पे फोकस करो कि भाई मैं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, कि जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं, अब मैंने कार तो दे दी, एक टाइम था जो भी कार आ रही है मेरे को दे दो. नहीं, अब हर साल कार का मॉडल आप नया बना रहे हो. वाई?
बिकॉज अब कंपटीशन बढ़ गया, अब डिमांड से आपकी सप्लाई भी बढ़ गई, डिमांड तो है लेकिन सप्लाई भी बढ़ गई, ऑर्गेनाइजेशन अब क्वालिटी की तरफ चली गई, तो प्रोडक्शन मींस आपकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो फोकस ऑन आउटपुट प्रोडक्शन, यहां प्रोडक्ट के ऊपर फोकस। भाई अब तो और भी बड़े प्रोडक्ट आ गए मार्केट में, तो मेरे को अपने प्रोडक्ट का एम टू इंक्रीज माई क्वालिटी ऑफ माई प्रोडक्ट, सो कस्टमर शुड बेसिकली एक्सेप्ट इट एंड ही शुड फाइंड इट अट्रैक्टिव। Then sales orientation. Now aggressive selling is required because there are so much competition now. That is where the presently automobile sector in India is selling, selling orientation, in the sense that we have now lot of products and we have to sell that product and we have to resort to aggressive marketing, selling strategies. Competition has increased. Sales के ऊपर aggressive sales. Marketing orientation. Now focus on customer. We never thought of what customer is looking for. पहला स्टेज था प्रोडक्शन, ओके, डोंट बॉदर अबाउट द कस्टमर, वो लेगा क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। देन कम्स प्रोडक्ट, ओके, लेट्स इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सो दैट इवन इफ दोज कस्टमर हु डू नॉट वांट इट, व्हेन दे सी द प्रोडक्ट दे टेक इट। देन कम्स सेलिंग, ओके, नाउ सेल इट मोर, सेलिंग के ऊपर फोकस, अग्रेसिव सेलिंग। देन कम्स कस्टमर, मार्केट orientation means customer के ऊपर focus, what customer wants, what they need, and then societal marketing, like social environmental concerns into marketing strategies. Let's think about society, let's think about environment, and let's start selling. So marketing orientation means this is production where you focus on output, product where you focus on your product or service, sales aggressive selling, marketing customer need, and societal, let's customer satisfaction, society and environment. So long term sustainability के लिए societal orientation is required. So what is the characteristic of orientation of market? Orientation of market means कि आप जो market की तरफ, जो customer की तरफ, the people who are going to purchase your product or service, what orientation do you keep for them? Are you trying to target them with excessive sales strategies कि sales के ऊपर aggression रखना है, या आप उनको impress करने की ट्राई कर रहे हो, आप उनकी requirement देख रहे हो पहले, फिर then accordingly you are providing, what is your strategy? Market basically new product and services we have to provide, unique preference of your target audience you have to see. So consumer perspective is very important. Orientation means consumer perspective, need of the consumer. So you need to focus on what the customer is looking for. Then market oriented data you need to have. Market oriented, basically you have to take a decision based upon data. So even Yourpedia whenever launches the product, one thing for a couple of days we check is like what is the demand of particular product, then only we launch the product. We see what is the demand, like demand for this particular module. If the demand is there, data we get, okay, we have high data, then demand, then we launch it. Adaptability and responsiveness, consumers preference. So I mean we need to see that there are certain things, there can be change in demand, adapting to the other things is very very important. So new opportunities, new challenges, adaptability and responsiveness is very very important. I give you example. When COVID came, at that time, when COVID came, at that particular time, there was a lot of requirement and demand for your hand sanitizer, lot of products, demand for lot of product at that time when COVID was there. So could you respond to the requirement? COVID के time पे there were so many product and services which were not required and product and services which were required. Online education got flipped at that time. जैसे ये बायजूस वगैरह थे and all, many online platform came up at the time because there was a requirement. Strategic positioning, market orientation. So if you put your product in such a way as a USP, what is the USP of your product? That is what is required by the customer. So positioning of your product into the requirement of customer is very very important. और कस्टमर की फीडबैक भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट ओरिएंटेशन इज लाइक कस्टमर फीडबैक इनटू डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस.
So feedback of customer is very very helpful for creation of the new product and we should take that. इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं जहां पे हमारा कस्टमर होता है, रेगुलरली दे कीप ऑन प्रोवाइडिंग अस इनपुट that this is not happening, this is required, everything is there. So that is called market orientation. Now some marketing concept we have already discussed friends, लेकिन कुछ principles है market के. सबसे important customer orientation. So marketing should focus on customer, what customer is looking for. Customer orientation होना चाहिए. Focus should be on the requirement of customer. Market segment. So segment means divide your market into, you know, this age group, this region, this particular segment, this particular sector. So you have to divide your market and accordingly follow the marketing strategies. I give you example. China is the biggest manufacturing nation in the world, manufacturing factory of the world. Now when China makes a product, they divide the market, they do the market segmentation, they make product, let's say Levi's jeans. Now when that Levi's jeans is made for India, the cost is kept accordingly. When it is made for America, cost is kept like that. So they make small changes to there. We say no, Chinese goods are cheap. No, it is not always cheap. Our Chinese goods are not good in quality. वो 2 ही हफ्ते चलेंगे because Indian market is price sensitive. Chinese know that. Chinese know कि इनको दिवाली के लिए पटाखे देने हैं या इनको लाइट सिस्टम देना है, वो इनको चीप चाहिए. महंगा दोगे बोलोगे 4 साल चलेगा, Indian are not going to purchase it. उनको 4 ही दिन चले लेंगे, सस्ता चाहिए. तो सस्ता अगर तुम दोगे तो that will be taken. That is the market segment. Target marketing, one or more market segment. So tailor-made strategies for particular target. Product orientation, आपको प्रोडक्ट के फीचर्स बढ़ाने हैं. मार्केटिंग मिक्स जिसको 4P बोलते हैं, that 4 elements है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. आई विल डिस्कस इट इन डिटेल. इसको मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं. आपके सिलेबस में भी है मार्केटिंग मिक्स कि आपको मार्केटिंग करनी है. देन फोकस ऑन दीज 4P: प्रोडक्ट, इट्स प्राइस, वेयर यू वांट टू लॉन्च इट, प्लेस एंड प्रमोशन, देन प्रमोट इट, समथिंग लाइक दैट. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ ethical and responsibly doing the thing. So जब हम बोलते हैं कि okay, before we launch a product, you see our product, हम वीडियो बनाएंगे, ऐसे आपको वीडियोस और मिलेंगे, ऐसे आपको कंटेंट मिलेगा. तो कस्टमर विल हैव some kind of this is a social responsibility also, that we provide customer some free content also. Relationship, आपको लॉयल्टी रखनी है. एक कस्टमर आपके से बार बार क्यों आएगा? Why a student will again purchase your module? अगर आप उसको दोबारा अच्छे तरीके से सर्व नहीं करोगे, दोबारा आपके पास नहीं आएगा. There is a point. Need, want, demand, ये हमने पहले डिस्कस किया. टारगेट मार्केट आपको देखनी है. वैल्यू प्रोपोजिशन, why customers choose our product compared to competitors. What is STP? Segmentation, targeting, positioning. Segmentation means divide into distinct group. As I gave you example of China, कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंट्री डिवाइड कर दिया. टारगेटिंग, बेसिकली आप वट एवर प्रोडक्ट यू हैव, नाउ सेलेक्ट वन और मोर सेगमेंट, लाइक वेयर यू आर फोकसिंग ऑन, रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया, वेयर आर यू फोकसिंग. तो व्हेन यू हैव डन द सेगमेंटिंग, यू नो दिस इज माय मेजर बायर, अर्बन इंडिया इज माय मेजर बायर, तो फोकस मोर ऑन दैट. तो टारगेट उस पे करो. पोजीशनिंग, सो position your brand in the mind of customers related to compare to position yourself uniquely, जिसको आप बोलते हैं USP, unique selling proposition. क्या है आपका? What is a unique feature due to which you will sell yourself? टेलर मेड मॉड्यूल है, जहां से पढ़ाया जाएगा वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कम ड्यूरेशन में है, आपका इजी कर दिया गया. यूरपीडिया का USP है, पोजीशन यूरपीडिया इनटू द माइंड ऑफ कस्टमर सो दैट दे नो दैट ओके, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए. कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for throughout the life cycle. Market research करना बहुत important है, because unless until you do the research of the market, you understand your customer, you understand the requirements, you may not sell your product. And social responsibility and ethics, as I told you friends. Now in your syllabus, marketing mix is separately mentioned. Marketing mix means 4 key elements that influence the purchasing decision of consumer. Product, the product which you make must satisfy customer's need and his want. जो need and want मैंने डिस्कस किया. प्रोडक्ट आपका ऐसा होना चाहिए. प्राइस, he should be willing to pay. As I told you, India is a price cost sensitive market. तो price accordingly. Place, distribution, channel and method used to make product available to customers. So how you
distribute it. Communication strategies to inform, persuade, influence consumer perception. So how do you persuade the customer? So that is called your promotion. How do you promote your product? आप किस तरीके से उनको कन्विंस करते हो? चैनल, मेथड. सो यूट्यूब, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इसके लिए प्लेस है यूट्यूब, प्रोडक्ट है IOCL मार्केटिंग मैनेजर CBT मॉड्यूल, दैट इज अ प्रोडक्ट. प्राइस ऑब्वियसली जो प्राइस इसका रखा जाएगा. प्लेस यूट्यूब, प्रमोशन मैं कैसे कर रहा हूं? इसके थ्रू वीडियो बना के. यूट्यूब इज अ प्लेस जहां पे मैं प्रमोशन कर रहा हूं इसकी, एंड मे बी एडवर्टाइजमेंट इसके हम करेंगे कहीं और, तो मार्केटिंग मिक्स ऐसा है. व्हाट इज होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट? all aspect of business, integrating marketing principles so that customer gets everything. Marketing strategies, function, so that I provide value to the customer. So holistic marketing concept. Marketing is not a separate concept. मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊंगा एज अ प्रोडक्ट मैनेजर और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आई शुड आस्क द मार्केटिंग मैनेजर कि कस्टमर को क्या चाहिए. इसको कंकरेंट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, कि जो प्रोडक्ट बनाने वाला आदमी है उसको ये पता होना, उसको पता होना जरूरी है कस्टमर को क्या चाहिए. जैसे मैं मेंटर हूं, टीचर हूं, आई शुड नो दैट व्हाट कस्टमर इज लुकिंग फॉर. अगर मेरे को मार्केटिंग मैनेजर बताएगा कि सर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर की इस नीड को पूरी करे, तो मार्केटिंग होलिस्टिक होना चाहिए. मार्केटिंग इज अ होलिस्टिक कंसेप्ट, इट इज नॉट सेग्रीगेटेड कंसेप्ट. सो मार्केटिंग शुड एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर एंड ही शुड ऑल्सो फील दैट यस दिस इज व्हाट आई वांट. मॉडर्न, अब मार्केटिंग कई कंसेप्ट आ गए. अब मॉडर्न मार्केटिंग में क्या आ गया? आप कस्टमर फोकस करते हो. द फोकस इज ऑन कस्टमर, अ लॉट ऑफ फोकस इज ऑन कस्टमर. मार्केटिंग इज इंटीग्रेटेड, लाइक pricing, distribution, promotion, development, product development, all things go together. When I'm developing the product, I'm talking about the pricing also, and I'm talking about how I'm to promote this product and many things, so that customer experience is really good. Market segment, I'm focusing on one size fit all approach cannot work. Yourpedia is the first platform which has come out with a tailor-made module. We realized very soon that now every exam will be having different requirement. So I cannot give same content, aptitude, reasoning, English. I cannot give same content. Already it is there for different exams. HPCL का एग्जाम हुआ अभी कुछ दिन पहले. HPCL exam is also being conducted by IBPS. We can provide HPCL non-tech entire thing to IOCL people also, but no, IOCL में there is a requirement, little bit different requirement. So I need to keep that in mind. Market को segment करना पड़ेगा, IOCL का लिए अलग, HPCL के लिए अलग, ऐसे tailor made. मैंने आपको बताया loyalty and long term perspective, customer relationship is very important. एंड दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको ऊपर ज्यादा फोकस है आजकल. फोकस किस पे है? कस्टमर, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, रिलेशनशिप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रिसेंट ट्रेंड क्या है? एआई बेस्ड. अब 360 डिग्री, दैट मीन्स इट इज गिविंग यू होलिस्टिक पिक्चर. एआई इज बीइंग यूज्ड नाउअडेज टू आइडेंटिफाई व्हाट कस्टमर इज लुकिंग फॉर. अच्छा, आपने ये चीज देखा होगा दैट यू आर सर्चिंग समथिंग ऑन द इंटरनेट एंड देन the same product keeps that is visible to you. आपको वही दिखना स्टार्ट हो जाता है. वो AI है सारे का सारा. डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट हो गया. SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप विजिबल हो, इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है. whenever somebody will look for some catchword, you will be visible. इन्फ्लुएंसर स्टार्ट हो गए. क्रिएटर मार्केटिंग स्टार्ट हो गया. क्रिएटर इज बेसिकली क्रिएटिंग वेरी गुड कंटेंट so that your product it becomes visible. एंड देन यूजर जनरेटेड कंटेंट, मतलब जो लोग पहले यूज कर चुके हैं, टेस्टिमोनियल बेसिकली. जैसे आपने योरपीडिया का प्रोडक्ट लिया एंड देन यू आर यूजर एंड इफ यू थिंक दिस प्रोडक्ट इज गुड, तो आपने कंटेंट जनरेट किया जिसको टेस्टिमोनियल हम बोलते हैं. ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इमर्सिव मार्केटिंग. सो आई प्रोवाइड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस टू द कस्टमर कि देखो ऐसा आपको मिलेगा. राइट, एआई पावर्ड कस्टमर सर्विस, चैटबॉट वगैरह सारे. डाटा प्राइवेसी, एम्फेसिस ऑन प्राइवेसी नाउ.
सब्सक्रिप्शन बेस्ड मार्केटिंग, दैट यू सब्सक्राइब टू अवर दिस थिंग फॉर पर्टिकुलर टाइम एंड आप यूज करो। ओमनी चैनल मार्केटिंग, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, डिफरेंट थिंग्स, रियल टाइम मार्केटिंग, social marketing. So these are the new things and this is the way to remember it. Smart digital marketing, S social media. तो ये हैं आजकल के लेटेस्ट मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज हैं नई। सोशल मार्केटिंग, स्मार्ट डिजिटल मार्केटिंग, ये टर्म याद रखो। S स्टैंड्स फॉर सोशल मीडिया, M फॉर मोबाइल या ओमनी चैनल, A फॉर AI, R फॉर रिस्पॉन्सिबल ग्रीन मार्केटिंग, T टेक्नोलॉजी, D data driven, I influencer, G generated content, इंटरेक्टिव कंटेंट। आप एक और नाम भी कर लोगे, इसको रटने की जरूरत नहीं, नाम भी कर लोगे तो आपको हो जाएगा। एंड देन फ्रेंड्स लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो द मोमेंट यू डू क्वेश्चंस, ये आपके 20-50 क्वेश्चन जो होते हैं नीचे, इनको करो और इन क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और दिस इज वन वे। तो ये 40 मिनट का आप मान के चलो, 50 मिनट का ये पहला लेक्चर, 1 घंटे से कम के लेक्चर होंगे। आपके 30 टॉपिक हैं, तो मेरे को लगता है ये आपका 30 घंटे से कम का कंटेंट है सारा। और 15 सितंबर तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर नॉन टेक्निकल भी आपका, उसको भी करो। मेरे को लगता है आपका एग्जाम निकल जाएगा। थैंक यू।